Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Muhammad Atiq Anwar, and you're watching my channel, Muhammad Atiq Anwar, and Education for us all. नाज़रीन खुश आमदीद, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर and Education for us all. जैसा देख सकते हैं अब एक बार फिर किचन में हूँ। तो जैसा ये सामने देख सकते हैं आज की जो डिश है ये है जी अचार गोश्त। ये मेरी बहुत पसंदीदा है। मुझसे तो नहीं बनती और ना ही मैंने कभी बनाई है, मगर हमारी जो प्यारी मिसिस ए जूनियर हैं और मिसिस ए सीनियर हैं वो इसमें बहुत माहिर हैं। तो मैं आप मिसिस ए जूनियर से कहूँगा कि वो हमें एक ईच स्टेप बताएं। Okay, so without further ado, what we're going to do is ask our master chef, Mrs. A Junior, to go through the steps. So I can see some yogurt over there, and obviously the various spices that we are going to use and we will introduce. So we will ask the master chef to explain the marinating process. Marinating का process बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैरिनेटिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा दही। दही को हम इस बाउल में डालेंगे, फिर हम उसके लिए मसाला लेंगे अचार गोश्त का। दैन हम उसमें गोश्त ऐड कर देंगे, उसको हम मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लेंगे। अच्छा, शुरू करो जी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। Okay, guys, the yogurt is ready there. So can you tell us how you prepared that, please? हमने इसके लिए 5 टेबलस्पून दही के लिए और हमने इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स किया है ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। Okay, guys. थिक दही था इस वजह से। Thank you. So this is 5 tablespoons, and we added some water to thin it. Are we going to add the meat? Yeah. Masala. The masala first. Very good. So this is the masala that we are going to add, viewers. So she's an expert. How many tablespoons would you say? 3? 3 tablespoons. 3 tablespoons, yeah. Okay, give that a good mix. हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो इसमें फिर हम अपना लैम्प ऐड करेंगे। Okay, the yogurt is ready for the marination. Are we going to add the meat in? So this is a kilo of mixed lamb. जैसे कि हमारा योगर्ट से में मसाला सही मिक्स हो गया तो हम इसमें अब लैम्प ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। So it's really important to mix this really well so that every piece of meat has masala on it. हमें इसको सही से मिक्स करना है ताकि सारे गोश्त में मसाला लग जाए, कोई भी टुकड़ा रह ना जाए। Okay, guys, that looks done. So we're going to cover that. It's obviously good to cover it with cling film, but we're just going to put a plate over, a tray over it. Okay, so how long are we going to leave this for? For 30 minutes. 20 minutes. Okay, so leaving that to marinate for a good 20 minutes. Correction, that should be 30 minutes, 30 minutes. Okay, guys, whilst that is marinating, we're going to prepare the paste. जी क्या डाल रहे हैं? ये हम ऑयल ऐड करेंगे, टेस्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा इसलिए। नाउ हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून कर लें। So we're going to cook the zira for a few minutes. Okay, we're adding the onions in now. Can we add the onions in, please? अब हम इसमें 2 अदद प्याज डालेंगे।
हमारा ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। कोई बात नहीं। Okay, so the onions have browned nicely. So we're going to add the ginger and the garlic paste. ये हम जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे 1 tablespoon एंड 1 tablespoon गार्लिक का ऐड कर लेंगे। राइट, Okay, give that a real good mix. Okay, so the next thing to add is the tomatoes. हम इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। कितने tomatoes थे? 3 टमाटर। 3 tomatoes. Okay, we're going to turn that into a paste, so it's going to take us a while. We're ready to add the masalas now, viewers. I think we've got salt, we've got paprika, we've got turmeric, and we've got garam masala. अब हम नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। Okay, so masala is going in. Okay, viewers, the paste is nicely made. Are we going to add the marinated meat? अब हम इसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड करेंगे। लो हीट पे करना है, दही है साथ में दही। हमें लो हीट पे करके इसमें गोश्त ऐड करना है। कितनी देर के लिए अब कुक करेंगे? हम इसको अब ज़्यादा देर के लिए करेंगे ताकि गोश्त भी है वो गल जाए। हम इसको एक घंटे के लिए रखते हैं। Okay, so this is going to be cooked for about an hour or so on slow heat, viewers. And give it a good mix. It's really important to mix it really well, viewers, so that all the meat is well covered with the masala. So that's going to be covered now, viewers, and cook for an hour or so. So we will visit in an hour. Okay, viewers, our Achaar gosht is almost ready. It has been an hour, so just a few more minutes, and in the meantime we're going to prepare the chili stuffing and the garnishing. अब हमारा गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका है, तो हम अब मसाला मिक्स करेंगे सब्ज़ मिर्चों में। Okay, so some chilies. पहले Sorry, we need to mix the masala first. मसाला ऐड करेंगे, हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। So we've got some masala. We're going to add lemon to that. करेंगे। Give that a good mix. We're going to put that into the chilies. So put a cut in. Acha ji, have some jai. अब हम मिर्च में काट लगाएंगे एंड मसाला इनमें ऐड कर देंगे। Okay, adding the masala into the chilies as so. Put the cut in. Stuff the masala goes in there. Okay, so there are our stuffed chilies with the achar masala. ये हमारी सब्ज़ मिर्चें रेडी हो गई, हमने इनमें मिक्स कर दिया है हमारा अचार मसाला। अब इनको हम अपने गोश्त में ऐड करेंगे। Give it a little bit of a mix. How long are we cooking for now?
और कितने देर? हम इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। Oh wow, that is lovely. The aroma is enormous. That is done now, viewers. We're just ready for our garnishing, and that garnishing is ये क्या है जी? ये धनिया है धनिया. जी, Okay. ये धनिया है, हम इसे Garnish करें. So first of all, a little bit of dhania. और मेथी थोड़ी सी आप थोड़ी सी मेथी. Okay, a little bit of genufreak methi. That is absolutely lovely. So I do hope you will try it, viewers. That looks delicious. What can we say? Thank you for watching. Please keep watching until the next time I say thank you again. Please keep the viewing figures up. Please support the channel. Please tell all your friends about it. ओके जी, ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा बना है हमारा अचार गोश्त. खुशबू पूरे किचन में है. तो जी अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना. अल्लाह नेगबान. गुड बाय. अल्लाह हाफिज़।